Okay, Mr. Devesh Verma, you are here for a mock interview for HPCL. So first of all, introduce yourself. Good morning, sir. My name is Devesh Verma. belong to Devariya, Uttar Pradesh. I have done my schooling from Devariya, where I was water conservation head for 2 years. I have done my graduation from Bharati Vidyapeeth College of Engineering, Pune, in the domain of mechanical engineering in the year 2022. My final year project was design and fabrication of solar-powered air purifier. Apart from that, I have done 2 months of implant training during my college time from Dayal Foodway. This is all about myself. Thank you. So after 20, in 22, you have completed your BTech, right? Yes, sir. So only 2 month internship you have done after that? Sir, it was the part of my college curriculum. So instead of doing it in my college, I joined an industry and gained some industrial knowledge over there. So right now you are working somewhere. No, sir, I'm not working. I was preparing for GATE exam, and uh, I'm fresher now. Okay, so why did not you choose placement in your college? Sir, I was very passionate about the energy sector, but none of the company came in from energy sector in our campus placement. All those were from IT sector. So I decided to prepare for GATE because GATE gives me an opportunity to enter in the energy sector through PSU. So do you know any work of HPCL in solar energy field? Uh, yes, sir. Currently, 208 megawatts of energy is being produced from wind and solar energy. At what location? Uh, Sir, I'm not sure about the location. Okay. So renewable energy, what different renewable energy sources in India we are utilizing right now? Sir, currently we are utilizing wind energy, solar energy, tidal energy, geothermal energy, uh, yes, sir, and hydropower also. Okay. And what about hydrogen-based energy? Sir, HPCL is also included in the green hydrogen project. So have you studied something about green hydrogen? No, sir. But you said you have interest in energy sector. Sir, as I was going through the details of HPCL, there was a very short about the green hydrogen project. So I will learn Okay. about it. So what is your short-term goal and long-term goal? Sir, my short-term goal will be learning and cope up with the HPCL environment and learn and execute myself and enhance my skill. And whatever will be the curriculum and work provided to me, I will dedicate myself to do them in a very dedicated manner and within the required time. And with the gradual growth, I believe that I would be able to be that much capable that I will get the opportunity to lead some major projects of HPCL in the upcoming years. Okay. So what skills you can tell us which may be helpful in deciding whether we should take you or not? Tell us three most important skills you have. So the post for which HPCL is recruiting now is a managerial post, and the skills required for that are adaptability, innovative skills, and a leadership quality and management. I believe that it's my strength actually to be adaptable in any situation. I also have So been how you working can with, say you have innovative skill? sir, during my college project, the project assigned to me was design and fabrication of solar powered air purifier. So in that project, instead of using some air or motor based, I thought that there should be innovative in it. So I used water based air purifier. I used nozzle instead of any pump. And the principle of my project was addition of suspended particles in the air with water that will help to settle down the suspended particles in the air. So that was innovative project for me. Okay. And what about your hobbies? Sir, talking about my hobbies, uh,
I am cooking. I love cooking and watching cartoons. कार्टून देखते हो? कार्टून तो बच्चे देखते हैं, आप अभी अपने आप को बच्चे समझते हो? So no, sir, it is not the barrier to watch cartoons. The age is not the barrier to watch cartoons. Actually, what matters is what we learn and get from the cartoon. In तो most कौन सा, of, विच सीरीज यू लाइक द मोस्ट? uh, sir, I used to watch Ninja Authority and Kick Buttowski, these types of cartoons. ओके। अच्छा, एचपीसीएल के कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताओ, क्या नॉलेज है आपको अबाउट एचपीसीएल प्रोडक्ट्स? Sir, HPCL is known for the petroleum products, petrol, diesel. Apart from that, it has LPGs also, and it also produces aviation fuels. One interesting project was अच्छा, used. एविएशन फ्यूल कौन सा होता है मेनली, क्या उसको मतलब लोकल लैंग्वेज में या हम डेली यूज में कौन सा फ्यूल ऐसा है जो ऐसे एविएशन फ्यूल यूज हो सकता है? Sir, the fuels having high octane number are used in aviation. अच्छा, कैरोसिन के बारे में जानते हो? व्हाट इज कैरोसिन? Yes, sir. It was कैरोसिन का earlier, यूज क्या है? uh, sir, it is used in making some Vaseline type of product. The Vaseline is based on petroleum, and it is actually the base material of kerosene. Are actually the base material of that Vaseline. Okay. अच्छा, ब्रिक्स के बारे में जानते हो? व्हाट इज ब्रिक्स? Yes, sir. बताइए। Sir, BRICS is an international association uh, in which Bangladesh, India, Sri Lanka, uh, Thailand, and one more country is included. Myanmar is included, and अच्छा, its headquarters. BRICS ब्रिक्स कंट्री के मैच करो नाम इससे जरा, किस किस का मैच करा तुम्हारा? B4 आपने बांग्लादेश मैच करा दिया, उसके बाद आर? Sir, the country name actually three countries are different from them: Bhutan, Nepal, India, Sri Lanka. One is Thailand and तो आप Bangladesh. तो आप सार्क के बारे में बता रहे हो? Oh, sorry, sir. I think I'm confused in it. ओके, ठीक है। मेरी सर। Okay, hello Divesh, I'm audible to you. Good morning, sir. Good morning. Okay, so first of all, just explain me your BTech project. So my BTech project was design and fabrication of solar powered air purifier. Okay, first, so what you have done in your project? What was your Uh, key so my responsibilities? so my project was based on the principle of addition of suspended particles in the air with the liquid, and the molecules in the liquid get attached with the water molecules and settle down. And there was a exit point in the base of my the purifier from which Hmm. the impure water can be taken out. I was Hmm. the main role of my main role was in the designing part. क्या कैसे डिजाइन करें सर? Sir, first of all, I noticed what is the requirement of an air purifier. So first, I noticed that there must be two fans. We used installed two fans at the inlet and exit also. Inlet was used for the suction of air. Just after the inlet fan, we used the air filter just to remove the more bigger particles of the air. Then inside of our chamber of air purifier, we use nozzles to spray the water droplets, and we separated them with the help of baffles. Baffles were used to reduce the velocity, also for give the proper time for the addition process. And then in the exit, we also installed a air filter, which to make sure that the water droplets and moisture should not come out from the air filter. Then in the Okay, exit, we also installed a fan. just tell me, how does the air get purified in the case of AC, simple air conditioning plant? Sir, in case of air conditioner, there is a air filter at the above of the condenser. Okay, and what are the remaining components? Let us say if Sir, you talk about simple AC. yes, sir, talking about the split AC, the compressor part and the condenser part at the exit of the in the outside of the room, and the main evaporator part and the expander part is inside in the split section of the
AC. Okay. Okay. What mode of heat transfer is dominating in the case of evaporator? So in case of evaporator, there is transfer from high energy to low energy, high energy reservoir to low energy reservoir. So whenever there is, in case of AC or refrigerator, uh, all the components in outside the main AC part or refrigerator part, those are at higher temperature, and with the help of the main conduction, the main Fourier's law, as the Fourier law states that heat energy transfer from high energy reservoir to the low energy reservoir. So it is based on that principle. Okay. Okay. Do you know anything about the IC engines? Yes, sir. What is catalytic converter? Sorry, sir, I'm not confident about. Okay. How do you control the emissions from the, let us say, petrol pump, some power plant, or some, let us say, from automobile engine? Sir, in the exit, where we use, I'm not sure about the name, but we use a component that filters out the air. Okay. See, the HPCL is working on the some greenhouse gases to control the greenhouse gases emissions. Okay. So, do you know anything about what are the recent projects or what they have implemented in their different ways to control these type of emissions? No, sir, sorry. Okay. Okay, just go through the sustainable development goals of the HPCL, okay, from their official site. Okay, so tell me the type of fuels. What are the required properties of a fuel to be used in any engine? Sir, main requirement of the fuel is the number of octane number. That is main thing that reduces the knocking effect in the petrol engine or diesel engine. For diesel engine, there is a cetane number, but in case of petrol, we use the octane number. One more requirement is the ignition temperature. Generally, the ignition temperature of diesel fuels are lower than the petrol fuels because diesel fuels are based on compression ignition, whereas petrols are burned on spark ignition. Uh, One more factor is the compression ratio. For petrol, it is higher, and for diesel, it is lower. One more thing is the density that separates the fuels. Okay. How many processes are there in the case of four-stroke engine, petrol engine, let us say we talk about? Sir, for four-stroke engine, it is completed in 2 cycles, and there 4 processes goes on throughout the 2 cycles. In two First one is cycles, the suction. Yes, sir. which 2 revolutions of the piston. two revolution of the piston. And how many processes are taking place at the time? In the So two total, revolution of plant? so in 2 regulation, there are 4 processes: suction, compression, power, and exhaust. Okay. Just show me the PV diagram and the TS diagram of a auto cycle. Okay, sir. Sir, it is the process of PV diagram. PV diagram. Okay, that is Yes. okay. Okay, just do one thing. In the same graph, okay, or just draw a new graph. In that, just compare the petrol cycle as well as the diesel cycle for the same heat rejection, okay, and for the same maximum pressure. And tell me which one is going to be more efficient. So for the same part Heat phase, rejection for the same heat rejection and for the same maximum pressure. For the same heat rejection and for the same maximum pressure. so for that, in that case, diesel engine will be more efficient. Okay, just show me on that stuff. So if I combine the both graphs, then this will be the diesel engine for the same pressure and same heat rejection, and this is the graph for petrol engine. But why the heat addition is taking place at a constant volume in the diesel engine? Uh, Sir, It is not correct graph. oh, sorry. Right. I included the diagram. Let me, Yes. sir, differentiate that. Yes.
just draw the same graph. Okay, draw the two cycles in the same graph. Yes, sir. Sir, this is the for a petrol engine, and this is for diesel. Now club And these for two. Club these two cycles in a single graph. okay, sir. Sir, this graph will develop. Again wrong. It is not correct. Why are you doing the mistake here while combining these two graphs? Where the heat compression process is taking place in the diesel cycle? Sir, in the compression process, the bottom cycle, the isentropic heat addition process. No, isentropic compression process. Where is the isentropic compression process? It is wrong. Then why we have a constant volume process in the diesel cycle? Sir, in diesel cycle, we do not use constant volume process. That is आपके constant आपके pressure heat ग्राफ में आ addition. रहा है ना? आपके Sir, ग्राफ में दिख रहा है ये? sir, in this, I have combined the Otto cycle and diesel cycle. वही तो. This one is the Otto cycle, and for the same pressure at the same this part. Oh, sorry. आप समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात, समझ गए. अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? Sir, mean effective pressure is that pressure at which maximum work output we get. मैक्सिमम वर्क आउटपुट. आर यू श्योर? For the same change in volume, W net work is maximum. हाउ डू यू कैलकुलेट द मीन इफेक्टिव प्रेशर? Sir, for calculating mean effective pressure, we use the work net indicated power divided by total swept volume. ओके, ठीक है, दैट इज ओके. ओके, एंड व्हाट इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन? Sir, specific fuel consumption is the total fuel consumed divided by brake power or indicated power. For it depends on which power we are calculating the specific case. If we are calculating the brake power, then for brake power it is mass consumed divided by brake power, and for indicated power we use the mass consumed divided by indicated power. ओके, ठीक है, नो इश्यू. ओके नवेश, लेट यू पास ऑफ फीडबैक. अब देखो, आपके पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आपने एक्सप्लेन करा वो ठीक था, कोई इशू नहीं है उसमें. आपके पास ये जो आईसी इंजन वाला क्वेश्चन है, इवन तो आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट ना भी हो तो थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए आईसी इंजन से रिलेटेड, ठीक है ना? तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपने ग्राफ में कहाँ गलती करी. वो थोड़ा सा आपके पास एक्सटेंड होगा कि ग्राफ हो रहा है, ठीक है ना? आप जो कंप्रेशन प्रोसेस कर रहे हो कांस्टेंट 1 से 2 और डीजल साइकिल में, उसको आप एक्सटेंड करते जाओ तब तक जब तक कि आपको मैक्सिमम प्रेशर रीच ना हो जाए. देन यू विल ऐड द हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर. ओके, थोड़ा ध्यान Sir, रखना. this graph will develop now. ना अभी भी चलते हैं. Sir, can you please show me? जस्ट Yeah. वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट. अच्छा, आपके पास अच्छा इस अभी चलो मैं शो नहीं कर सकता. एक काम करो, आपके पास जो साइकिल है ना, साइकिल में जो आप कंप्रेशन प्रोसेस कर शेयर रहे कर हो, लो. हो गया? चलो ठीक है सर, कैन शेयर जस्ट वेट अ मिनट. दिनेश, जो आप बोल रहे हो. हेलो. हाँ सर, जस्ट वेट अ मिनट. ओके दिनेश, इज स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, sir. ओके. अब देखो, आपके पास यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहे हो आप. आपके पास यहाँ पे ये हो गया सिंपल सा, आपके पास हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना? अब जब Yes, ऑटो साइकिल क्रिएट कर रहे हो, दिस विल बी द ऑटो साइकिल. अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिंपली आप इसे कंपेयर करो, आप यहाँ पे क्या करो, कंबाइन करो. तो फॉर द सेम हीट प्रेशर, अब जो कंप्रेशन प्रोसेस है इट विल फॉलो द सेम पाथ. Okay, Yes, sir. because if you create another graph from a single point, it violates the second law of thermodynamics. Okay, अब ये जो है साइकिल ये एक्सटेंड करके यहाँ मैक्सिमम प्रेशर, then Yeah. the constant pressure heat addition will take place. Then
the expansion process will take place. So this red color graph line is representing the diesel cycle and the black color is representing the Otto cycle. Okay, तो अब यहाँ से डायरेक्टली आप कह सकते हो कि एरिया अंडर कर्व है वो किसका ज्यादा है, डीजल का ज्यादा है. डीजल का. ओके, सर वर्क आउटपुट और आपका एफिशिएंसी जो होगी वो ज्यादा होगी डीजल साइकिल की. ओके, ये आपको थोड़ा सा याद. तो इसमें आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी. और इवन तो अगर आईसी इंजन फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो प्रिपेयर जरूर करना आपको इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फेवरेट सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे. आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर होने चाहिए, जस्ट ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए. मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, मीन इफेक्टिव अब जब आप वर्क पिस्टन जब काम कर रहा है तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली आपका वेरी करता है, ठीक है ना. तो मीन इफेक्टिव प्रेशर एक कांस्टेंट इमेजिनरी प्रोसेस है जो कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करेगा जो कि अंडर एक्चुअल कंडीशन या अंडर वेरिंग प्रेशर आपको प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. इसका भी आपको ध्यान रखना है. फिर चाहे ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालो, चाहे फिर आप इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर. अंडरस्टूड. ओके सर. इसका थोड़ा सा ध्यान. ओके ओके, ओवर टू यू सर. हेलो सर, यू कैन कंटिन्यू. हेलो देवेश, यस सर. थोड़ा सा नर्वसनेस को कम करो चेहरे से, जी ठीक सर. है. बिना बात के क्यों घबराना यार. जी सर. आप एक डील करने जा रहे हो इंटरव्यू में ना, यस सर. कि भाई मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, आपको इनकी नीड है, मुझे आपकी नीड है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट तो है. ओके सर. उसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अपने दिमाग पे, ठीक है. ठीक है. अच्छा है, अच्छा कर लोगे तुम आराम से, बढ़िया परफॉर्म करोगे मुंह पे. बस दिमाग से डर निकाल दो कि नहीं होगा, क्या होगा. जी सर. फोकस करो कंटेंट पे बस, कि हाँ जो पूछेंगे उसको सही तरीके से सोच समझ के आंसर देना है, पूरे हो बढ़िया तरीके से बस. जी सर. और ब्रिक्स ये थोड़ा पढ़ लो. ब्रिक्स जो भारत, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है यार, ये तुम सार्क पे चले गए, ठीक है. सर. अभी ब्रिक्स समिट होने वाली है ना थोड़े दिन में, उसमें जाएंगे ना पीएम हाँ. मोदी. जी सर. तो जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी, जैसे इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए हमें, एक इंजीनियर को पता होना चाहिए, जी सर. ठीक है. और वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी सी, मिडिल ईस्ट के बारे में, कंट्रीज की लोकेशंस, इंडिया में ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इनका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए. एक दो क्वेश्चन कई बार ना पूछते हैं. ओके सर. और उसके अलावा फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आगे का, तो वो आप बता ही दोगे, ठीक है. जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने बातें लिखी हैं उन सब में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं वो. कोई हाँ भी सर, वो आपने मैंने अच्छे से इंटर्नशिप प्रिपेयर करी है, किया है. प्रोजेक्ट करा है, कुछ भी, कोई कोडिंग करी है, कोई सॉफ्टवेयर सीखा है, किसी से पूछ लेंगे कुछ बेसिक. ओके तो सर. उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि हाँ आपका आंसर मैच करे, कॉन्ट्राडिक्ट ना करे वहां पे. हम्म. क्योंकि उनके हाथ में पेपर रहेगा, आप कुछ और बोलने लगे और वहां पे कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर वो सर वो पकड़ा जाता है. जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरा है वो इसी से क्वेश्चन करे हैं ना सर? बिल्कुल डायरेक्ट हाथ में रख के उसको. हाँ सर, तो वो मैंने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से ही सारा रिलेट करके लिखा हाँ है. तो बस मैच करे और फिर उनका जस्टिफिकेशन जो भी लिखा है आपने हर चीज का, हाँ सर, मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया ठीक है. है. और वन वर्ड अपने लिए चूज कर लो बढ़िया सा, है कि वन वर्ड में अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है तो कौन सा वर्ड आप यूज करोगे. सर इनोवेटिव वर्ड सोचा है सर, इनोवेटिव वर्ड. हाँ तो ठीक है, फिर इनोवेटिव में क्या क्या आपने इनोवेशन करे हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना. सर मैं उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेट कर सकता हूँ. हाँ लेकिन वो ये भी कहेंगे यार एचपीसीएल में आपको इनोवेटिव कुछ करने को मौका ही नहीं मिलेगा, या क्या करोगे इनोवेटिव, या तो काम करना है आपको मार्केटिंग में. तो उस हिसाब से मतलब वो बोलेंगे आप पीएचडी में चले जाओ, रिसर्च कर लो फिर. तो आप उस तरीके से बोल रहे हैं कि सर एचपीसीएल एज ए ऑर्गेनाइजेशन तो नए नए इनोवेशन करती है ना, तो उसी के साथ अपने आप को सर इंक्लाइन कर. इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं क्या कि करेंटली 60 प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चल रही हैं, हाँ और इन बिल्कुल. फ्यूचर और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, और इन लॉन्ग टर्म मुझे इफ पॉसिबल मुझे उन प्रोजेक्ट्स को लीड करने का भी मौका मिलेगा, तो एट बिल्कुल दैट टाइम बिल्कुल. आई विल यूज माई इनोवेटिव थॉट्स. परफेक्ट, बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है. ओके. ओके. चलो, और मेनली कॉन्फिडेंट रहना है वहां पे बस.